approaches पढ़ितले मैम approaches पढ़ुतले अच्छा okay see what is industrial relation, what are the actors in industrial relation, what are the objectives of industrial relation, and what are the approaches to industrial relation, right? So the approaches to industrial relation, various and several approaches are there developed by different eminent person towards the industrial relation. So already we have discussed something related to unitary approach. Unitary approach means what? A group of people. Unitary means a unity, a group of people, no? Having a healthy relationship among the group and also try to maintain a harmonious relationship between group, team to management. Means it is try to maintain healthy employer-employee relation in the industry. Unitary approach believe conflict should not be there in the industry. If the conflict will happen, so we have to avoid the conflict, right? If the conflict will happen, then it must be resolved. So that is the unitary approach. Already we have discussed. Pluralistic approach means what? Different individuals having different groups. Different groups having different objectives, the leadership style, the we can say the different values, ideology in a different group. Yes. Leadership style, right? Also, ma'am. Leadership style also. Now, having different groups, that's why the conflict is there. Conflict and the conflict is inevitable in nature. We cannot avoid the conflict because different groups are there in the industries. Now, if the conflict will be there, if the conflict is there, then we have to resolve the conflict through collective bargaining. Jodi hame conflict sethi hella, then hame kon kariba conflict ko resolve kariba. Kemiti kariba na through collective bargaining, through bipartite machinery, right? Tripartite machinery should not be added, right? That is the pluralistic approach. Already we have discussed. Radical approach kon. The radical approach also we can call as a Marxist approach. Marxist approach, that radical approach also we can call a Marxist approach that developed by Karl Marx. Karl Marx, हमको समझ ना हमको सुनी चे जानी चे Karl Marx करो, ये a radical approach design करते हैं. तो why the industrial unrest is there? According to Karl Marx, the radical approach, why the industrial unrest is there? Kahin ki industrial unrest ho jaun, industry kahin ki conflict create ho chi. Why? Because the industrial unrest is there because due to the capitalist society, capitalism. It means what? Basically we can say the employer exploit the employee. The employer exploit the worker to not providing a minimum things towards the worker. That's why the industrial unrest, the industrial conflict is there. If the employer will change its attitude, then definitely the industrial peace can be maintained. That's said by radical approach or also we can call it as a Marxist approach developed by Karl Marx, right? Industrial unrest due to the attitude of the employer towards the employer, the negative attitude, that is exploitation of the employer towards the workers, right? Not providing minimum things towards the worker. So if the employer will change its attitude, then definitely industrial peace can be maximized. That is a radical approach. Already we know. Karl Marx kon कहउतिले rich माननको ठु पूरा हमें जो जबरदस्त आनिकी पोर मानको भितर हमें डिस्ट्रीब्यूट करिबा तांकर सेही आइडियोलॉजी से सब अडॉप्ट करथिले, राइट? से अनुसार से तांको थ्योरी मध्ये डेवलप करछन्ती. Psychological approach, psychology. See, in industry, the various peoples are working, different people having different perception. Psychology means what? Psychology means it leads to perception. Different lokankara different perception achi. The perception, different workers having different perception. Semanakara different perception semane hold करचंती कोटी industry रे. The perception towards the management prati tankara perception. Kona perception? The perception is that the management utilize the worker in the industry. The management utilize the worker at the workplace. But instead of this, the management not providing a minimum things towards the worker. And management always try to be in a win-win situation. Ta mane kona?
मैनेजमेंट सब बेले तार तार विन विन सिचुएशन रे से रहिबा को चाहूची तार माने तार नीड को फुलफिल करबा को चाहूची बट द मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न टुवर्ड्स द वर्कर द मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर these are the things these are the perception holding by the workers in the industry that's why the industrial dispute industrial unrest and industrial conflict is there right according to psychological approach now it is the necessary things now what we have to do no it is a responsibility of the management they should change this like perception of the worker those workers are holding so that we can maintain the industrial peace and harmony এই যে তাଙ୍କର perception को हमको चेंज करिया को पड़िबो काहा के चेंज करबो डेफिनेटली द मैनेजमेंट चेंज विल चेंज दिस परसेप्शन नो हमें एटा हमें केबे भी नो कि हमें वर्कर मान को एक्सप्लॉइट करूनु कि वर्कर मान को प्रति हमर कोन हमर चिंताधारा छ वर्कर मान को प्रति हमें किते कंसर्न एटा मैनेजमेंट प्रूव करिया पड़िबो इन फ्रंट ऑफ द वर्कर्स सो दैट कोन हबो हमर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हबो नाही एटा हला साइकोलॉजिकल अप्रोच सोशियोलॉजिकल अप्रोच कोन कहूची सोशियोलॉजिकल अप्रोच से in an industry different individual people are working different group of people are working having different custom belongs to different custom traditions and holding different values and norms different group different individual having different custom and tradition samane ko sociological tamane kon society ko belong karuchନ୍ତି different society different group ko belong karuchନ୍ତି जार के डिफरेंट कस्टम डिफरेंट ट्रेडिशन रो लोक अछंती तो कोन हबो सो दो पीपल्स आर बिलोंग्स टू डिफरेंट कस्टम्स डिफरेंट ट्रेडिशन डिफरेंट वैल्यूज सो व्हाट हैपेंड सो डेफिनेटली द कॉन्फ्लिक्ट इट मे ऑकर इन द इंडस्ट्री नाउ हाउ वी कैन मेंटेन सच काइंड ऑफ थिंग्स it is the responsibility of the management it is the responsibility of the industry the management have to maintain all the things in a systematic manner means we have to give priority to all the traditions all the customs all the values all the norms of the people are holding in a particular industry so what will happen ultimately if we will give the same values to all the people definitely basing on this we can maintain the industrial peace आमे ए अनुसार आमे इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करि परिबा त माने आमे सब कस्टम को सब ट्रेडिशन को समान प्रकार कोन समान भाव रे आमे समान को ट्रीट करबा ना का को अधिक दबा ना का को कम दबा समस्त को आमे समान भाव रे ट्रीट करबा इक्वालिटी मेंटेन करबा सब ट्रेडिशन कस्टम वैल्यू नॉर्म सब को सो दैट आमे कोन करि परिबा लोकन जो चिंता धारा सेटा को आमे मेंटेन करि परिबा और इंडस्ट्रियल पीस आमे मेंटेन करि परिबा दैट इज अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच तो आमे जानि छे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मींस द इंडस्ट्री हैव टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग the industry should not treat human being as a machinery as a material right the industry should not treat human being as a commodity the industry should not treat human being as a means any kind of we can use and throw it se sabu ame treat karibani the traditional concept already ame padiche the growth and development of industrial relation the growth of and development of human resource management concept ram padi ke asche so human relation approach jota ke Milton Mayo father of human resource management डेवलप करथिले से कहले कि कोन इंडस्ट्री हमें केमती पीस मेंटेन करबा हाउ वी कैन मेंटेन पीस इन द इंडस्ट्री इफ द इंडस्ट्री विल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज ए रिसोर्स ह्यूमन रिलेशन मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग दैट इज अ वर्कर दैट इज द एम्प्लॉई हार्मोनियस रिलेशन हेल्दी रिलेशन and treat human being as a resource basing on this give much more priority towards the employee towards the worker instead of the machinery and material ता अपेक्षा हम ह्यूमन बीइंग को अधिक प्रायोरिटी दबा ह्यूमन बीइंग को अधिक तार कोन समानकर वैल्यू दबा सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली वी कैन मेंटेन हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन जेटा कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बेबी हबन दैट इज अ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ए सब को केही डिजाइन करछन्ती से ना हम इते मन रखिबा दरकार नै सेति पई सब मो कहूनी सो सब जो मॉडल आको जने डेवलप करछन्ती right our psychological approach Mason Hari develop करछन्ती sociological approach G migration develop करछन्ती human relation approach Elton Mayo develop करछन्ती radical approach Marxist approach Karl Marx develop करछन्ती एमति सब गोटे माने मॉडल डेवलप करछन्ती developed by somebody no some eminent persons Giri approach कोन कहूची Giri means it is the Giri
that is this approach developed by VV Giri, the former president of India. Former president of India jitla mo VV Giri thile, siye tankara experience to a model that contribute towards the industrial relation. According to him, how we can maintain industrial relation, how we can maintain industrial peace. According to VV Giri, if the industry will adopt, if in an industry, any kind of dispute, any kind of conflict between the management and workers, industry mane to ye hobo hi hobo. Kahinki hobo that we will discuss later. Kon pai hoba me collective bargaining WPM ramine discussion kariba. So hobo hi hobo. But tankar experience ru siye kale how we can resolve it, how we can solve it. Siye kahile ki if any kind of conflict is there in the industry, so you should solve your conflict within the industry. It means ame jo tinita actor edi charita actor padhile, employer one actor, workers another actor, state is another actor, and media multimedia is another actor. So CA कहले ame eti bipartite machinery adopt kariba. Bipartite machinery means what? Two persons must be involved in that particular area. Through collective bargaining, ame collective bargaining through hi ame problem ko sort out kariba. Third party interference, that is government interference, media interference should not be there. So basing on this, we can maintain industrial peace and harmony. Jette jaha conflict habo, jette jaha problem habo, sabu problem ko amo ghar bhitar hi ame sort out kariba. Podosi ro interference ame kareba nahi. Jemti ke podosi di ke etela government, media haigala podosi. So according to VV Giri, the former president of India, he said, no, industry means conflict will be there. Conflict is the hobo, but how we can resolve it? We can resolve it through bipartite machinery, through collective bargaining, through interaction, through discussion between management and workers, so that we can maintain industrial peace and harmony. According to VV Giri, samoste bipartite machinery ko focus karchanti. Third party interference को पूरा जेमती कि कार्ल मार्क्स कहले radical approach कहला कि जते हमें ये करूची कि मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट करची वर्कर माने कौन करिवे गवर्नमेंट को जीवे थर्ड पार्टी अडॉप्ट करिवे हला जते थर्ड पार्टी अडॉप्ट करिवे सेठी गवर्नमेंट कौन करिवो गवर्नमेंट सपोर्ट करची काहाकू मैनेजमेंट को सपोर्ट करची रेदर वर्कर्स एटा radical approach कोची मु कहूनी हला सो radical approach कहले जते वर्कर्स जीवे मैनेजमेंट पाखु गवर्नमेंट पाखु गवर्नमेंट कौन करिवो पावरफुल लोक को सपोर्ट करिवो एटी पावरफुल किए पावरफुल हला मैनेजमेंट तो एटी इंस्टेड आपको वर्कर्स को हेल्प करिया बदले से का हेल्प कला मैनेजमेंट को because they are the powerful person, they have that much of capacity to control the government. So सेही पई कोन होची सो एमाने आउरी एक्सप्लॉइट होचंती. So सेही जो concept को से कहले तो आमे कोन करिबा so ultimately we have to settle the things through bipartite machinery. समस्त bipartite machinery को एटी फोकस करचंती. And Gandhi ji madhya seya कहले Gandhian approach, also we can call as a trusteeship approach, also we can call as a non-violence approach. Gandhi ji variety kind of na देचंती industrial relation रो Gandhian approach को हला जो थ्रे के trusteeship approach हमें ताको कहचे non-violence approach कहचे. So गांधी जी कोन कहले गांधी जी को आइडियोलॉजी पूरा डिफरेंट थिला टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिलेशन जोटा कि से डेवलप करथिले तांकर जो थिला अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गोटे से प्रेसिडेंसी पे कि गोटे एसोसिएशन डेवलप करथिले तांकर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थिला अहमदाबाद रे सो से अनुसार से तांका आइडियोलॉजी देथिले कि गांधीयन अप्रोच कहितला नॉन वायलेंस अप्रोच हाउ वी कैन मेंटेन इंडस्ट्रियल healthy industrial relation. Now we can maintain healthy industrial relation. Here, the management, the employer should treat worker as a children. See, got a different ideology नहीं क्या असले. कौन कहिले ना management should treat worker as a children, and management itself should play a role as a father. যদি এটি ম্যানেজমেন্ট ফাদার রোল প্লে করিব আর ওয়ার্কর কো ট্রিট করিব as a children, so definitely we can maintain a harmonious and healthy industrial relation. जेमती आम घरे आम फादर हमको ट्रीट करचंती हमरो नीड एक्सपेक्टेशन अनुसार आम किछि चिंता करिया पूर्व आम नीड को फुलफिल करचंती जोटा कि आम घरे आम फैमिली रे गोटे एते सुंदर गोटे रिलेशन आम मेंटेन करछे कॉन्फ्लिक्ट रो कोनोसी माने ये ही नै आम घरे सो सेमती आम इंडस्ट्री मेंटेन करि परिबा केमिति ना जदी एम्प्लॉयर ए टाइप रो ट्रीट करिवो एम्प्लॉय प्रति. So this is what the Gandhian approach said. No,
that is basing on this non-violence. We will not create any kind of violence in the industry. Management, the healthy, harmonious industrial relation, it can be possible between management and workers if we can adopt such kind of relation between the management and workers. That's said by Gandhiji. So industry, industry is a emiti part of our society. Without industry, we to sustain Industrial Dispute Act 1947 padiba. Without industry, we depend in the industry in our day-to-day life. In fact, आम जिते मॉर्निंग रे उठुचे आखि मुह धोइबा पूर्वरु आम इंडस्ट्री हमको दरकार पड़े ईच एंड एवरी मोमेंट हमको इंडस्ट्री हेल्प करूची कौन ना हमर वाटर सप्लाई पे बोले हमको गोटे प्रकार हमको फैसिलिटी दरकार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे बोले हमको इंडस्ट्री से सपोर्ट करूची हमको जदी हम मिल्क दरकार पड़े से इंडस्ट्री सपोर्ट करूची हम जदी क्लॉथिंग दरकार से इंडस्ट्री हमको जदी फूड दरकार से इंडस्ट्री जदी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैला इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हैला इंडस्ट्री ये सब हेकी जदी स्ट्राइक हैला इंडस्ट्री सब हेकी जदी कोन हैला ना बंद हे गेला ताल अल्टीमेटली द सोसाइटी कैन नॉट सस्टेन अल्टीमेटली द सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव सो आम पाखे पैसा थिबो किंतु आम पाखे कोनोसी किछि फैसिलिटी और जिंस नथिबो तमे सर्वाइव केमति करियो सो आमे हमर डे टू डे लाइफ रे हमर सर्वाइव करबा आमे डिपेंड करछ हम इंडस्ट्री ऊपर एई ना टिके देखंतु पावर कट हे जाउची वैरायटी एरिया रे सो ता पई केते जे टाटा कहूची कि अरे आमे पावर देई पानु जेतु हमर ट्रिप करूची सो व्हाटएवर मे बी द रीजन देखंतु केते आमे डिपेंडेंट इंडस्ट्री ऊपर जोथि पाई कहि कि आज का डेट रे सामान्य पावर कट पई कोन सिचुएशन हेलानी हमर कारण हमर सेमति हीट वेव अछि जोटा कि 45 46 आमे टॉलरेट भी करि पाने हमको करंट दरकार जोटा कि हम सस्टेन करि परिबानी so that is the importance of industry in our day to day life चिंता करंतु वाटर आसीबनी गोटे दिन ए सिचुएशन रे इलेक्ट्रिसिटी आसीबनी गोटे दिन ए सिचुएशन रे हमर को सिचुएशन ए जो हीट वेव रे तो this is the importance of industry towards the human being towards the individual life so सेटा को कहूची हम केते सुंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करिबा so that the industry will run smoothly and society also get every facility and benefit and society also can sustain बुझिले ना पिला माने yes ना yes ma'am पूरा क्लियर ना clear ma'am हां कोंतु ma'am there is lot of approaches you have described very clearly thank you so much but ma'am I have a question that which approach is the best to follow in the industrial relation to maintain the harmonious relation see it's depend on this sunanto it hame kahiba different approaches are there it's all the approaches are the best approaches for the industrial relation all the approaches but it's depend on the situation it's depend on the industry it's depend on the industrial situation based on this which approach we will adopt देखंतु for example एठी जदी हमें देखिबा कि ना लोकंकर साइकोलॉजी गोटे प्रकार अछि कोन लोकंकर गोटे परसेप्शन हला नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करछंती हला कोन ना एम्प्लॉयर हमको एक्सप्लॉइट करूची हमें सेठी साइकोलॉजिकल अप्रोच ता अडॉप्ट करि परिबा एम्प्लॉयर एठी कोन करदिबो चेंज करिवो तारो एम्प्लॉयर साइकोलॉजी को फास्ट बापा देखे एमिति सिचुएशन नुह एमिति नुह कहि कि तारो फास्ट ताको तारो साइकोलॉजी को चेंज करिवो सेठी साइकोलॉजिकल अप्रोच ता आपन को इंप्लीमेंट करिया पड़िबो धरंतु आपण एठी कोन कले आपनकर कस्टम ट्रेडिशन कहले त हमें धरंतु आपनकर एठी रथ यात्रा रे हमें छुट्टी देई देले ता परे संगे संगे ईद अछि हमें छुट्टी देलेनी ईद रे ता मान हमें कोन कले डेफिनेटली इंडस्ट्रियल हार्मोनी मेंटेन करि परिबनी पीस मेंटेन करि परिबनी एटा इंडस्ट्रियल वायलेंस हबई हबो सेठी डेफिनेटली हमें गोटे को प्रायोरिटी देला गोटे कम्युनिटी को गोटे ट्रेडिशन को प्रायोरिटी देला गोटे ट्रेडिशन कस्टम को प्रायोरिटी हमें देलेनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हबो ना हबनी हबो तो सेटा को हमको देखिबा को पड़ियो हम इंडस्ट्री रे सेई मॉडल ता दरकार की सेई मोमेंट पाई बोल बुझिले ना सो डिफरेंट मॉडल डिजाइन है डिफरेंट फॉर दिस एज पर द सिचुएशन आपण को सिचुएशन रे को मॉडल ता यूटिलाइज करिवे आपण को पे डिपेंड करछ ओके मैम ठीक है क्लियर ना ओके चलो एठी आपण radical approach तो आगे मैम radical approach other name of the radical approach we can call as a marxist approach marxist काहे कि कहा गला marxist approach कारण आपको डेवलप करथिले कार्ल मार्क्स सूत्र जदी आपण देखिबे कार्ल मार्क्स रो आइडियोलॉजी हैला जते आपण कार्ल मार्क्स रो थ्योरी को पढिबे तांका आइडियोलॉजी कोन जानछंती तांका आइडियोलॉजी हैला रिच मानन कोठू माने जबरदस्ती आनीबा तांकर जते सब प्रॉपर्टी हैला
माने तांकोडू आनी कि हमें कहा को डिस्ट्रीब्यूट करिया अमंग द पोर पीपल एटा हला तांका आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स कर जोटा कि जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी थिला कहार कहले गांधी जी कर जोटा कि हम ट्रस्टीशिप कहले गांधी जी कहले ना 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 समथि केमथि हबो आमे गोटे काम करिबा धर गोटे रिच पर्सन रो बहुत प्रॉपर्टी अछि तार जत्ते की बंचिबा पई दरकार खाली डिफरेंस ता खाली भलो से बुझंतु जत्ते की बंचिबा ट्रस्टीशिप ट्रस्ट मु हेले ट्रस्टी मो सही संपत्ति रो मु हेले ट्रस्टी माने कोन मालिक जो मोर जेन तार संपत्ति अछि सेटु कोन करबी मोर जत्ते की बंचिबा पई मु रखिबी कोन बंचिबा पई ना फूड क्लोथिंग शेल्टर गोटे बेसिक नीड मोर फुलफिल होला पई हबा पई मु सेत्ती की प्रॉपर्टी मो पाखरे रखिबी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मु कोन करियो मो सो इच्छा रे मु सोसाइटी रे पोर लोकन को बांटी देबी एटा किए कहले गांधी जी कहले ट्रस्टीशिप थ्योरी रे कहले हैला किंतु सेटा हमें केबे भी करबा कि इट इज कंप्लीटली नॉट ना आपण करिवे ना मु करिवे ना एक्स करिवे ना वाई करिवे केही करिवे हैला सेति पे कार्ल मार्क्स कहले एटा बेकार गप एटा बिल्कुल केही करिवेनी सेत हमें कोन करबा रिच मान को ये करि कि आनिबा लुटी कि आनिबा पोर मान को हमें सप्लाई करबा सेही कांसेप्ट सेही डिजाइन करथिले रेडिकल अप्रोच से से कहले कि इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी the employers are exploiting towards the worker employer माने कोन करचंती मार्क्सिस्ट अप्रोच कोन कोची इंडस्ट्री रे एम्प्लॉयर माने एक्सप्लॉइट करचंती वर्कर माने एक्सप्लॉइट माने कोन नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस longer working hours worker spending towards the industry long means long duration na employee spending towards the industry they are spending there much more time जेमती कि 14 घंटा 15 घंटा माने काम करचंती but the employer not paid minimum wages healthy working environment is not there so workers suffered like anything in the industry according to Karl Marx तो ए सब प्रॉब्लम हेले वर्कर माने का पाखु जिबे डेफिनेटली जिबे गवर्नमेंट पाखु देखो भाई हमर कारण गवर्नमेंट होची थर्ड एक्टर गवर्नमेंट हला सब प्रॉब्लम रो सॉर्ट आउट करिवो सो वर्कर माने जिबे का पाखु गवर्नमेंट पाखु worker will go to the third party that is the government so what will happen ultimately the government is not supporting to workers rather the government is supporting to the employers because the employer having a powerful person having much ta pakhare kon achi bahut power elite person elite mane kon कहले बहुत powerful person जेटा कि हमें कहबा जेटा कि मनी ता पाखरे बहुत पावर अछि मॉनेटरी पावर ना having a management having a employer सेति पई कोन कला ना से माने कोन करछंती एम्प्लॉयर को हेल्प करछंती तो अल्टीमेटली सफर के होची वर्कर सफर होची तो इटा हम कोन करिबा रेडिकल अप्रोच कोन कहूची तो एठी वर्कर द वर्कर हैव टू मींस व्हाट टेक देयर स्ट्रांग स्टेप एंड बेसिंग ऑन दिस दैट शुड माने हम कोन करिबा एठी ना वर्कर माने स्ट्रांग स्टेप एठी नेबे and basing on this we can maintain a harmonious industrial relation and employer kon karibo ye kariboni kon exploit kariboni kaha ko worker ko a jodi employer was exploit kala worker ko the worker have to take this strong step kon nabo worker tar kam ta hatere kon da achi ta hatere achi kon strike union achi ta hatere strike achi ta hatere सुनते इंडस्ट्री रे हम जते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पडिबा आगो को दुईटा जो अछंती हमर किए ग्रेट रोल प्ले करछंती गोटेला मैनेजमेंट आ गोटेला वर्कर कल सुनी तांतु दुई जन दुईटा विपन धरि कि ठिया छंती विपन माने कोन AK-47 धरि कि ठिया छंती कि ना दुई जन दुईटा बरे स्ट्रांग विपन धरछंती कि वर्कर गोटे स्ट्रांग विपन धरछि एम्प्लॉयर गोटे स्ट्रांग विपन धरछंती सो एई अनुसार हम इंडस्ट्री रे दुई जन आके कंट्रोल करछंती वर्कर कोन एम्प्लॉयर जदी एक्सप्लॉइट कला वर्कर कोन कला यूनियन को धरि कि स्ट्राइक को गला हैला जदि वर्कर हैरान कला मैनेजमेंट कोन कला लॉकआउट कर देला लॉकआउट कोन लॉकआउट के करबो लॉकआउट वर्कर्स कर परिबोनी वर्कर ओनली स्ट्राइक करि परिबो मैनेजमेंट कोन करबो लॉकआउट कर देबो त माने ताला पड़कई देबो इंडस्ट्री जदि इंडस्ट्री ताला पड़ी गला अल्टीमेटली वर्कर को पैसा मिलिबो कि वर्कर को पैसा मिलिबोनी तांको वेजेस मिलिबोनी डेली वेजेस ए अनुसार इंडस्ट्री रे कोन होय डिस्प्यूट ले छाती कि आसे गवर्नमेंट आसे सॉल्व करियो ते गवर्नमेंट कोन करबो आज का डेट रे जो माने स्ट्रांग ट्रेड यूनियंस ना आसी गलेनी जो स्ट्रांग ट्रेड यूनियन नहीं से कौन करिवो मैनेजमेंट को सपोर्ट करिवो कारण मैनेजमेंट रो काफी पैसा अछि से गवर्नमेंट को से अनुसार कंट्रोल कर परिबो सो एई अनुसार एई जो सिस्टम ता अछि आपको हमको कंट्रोल करिया पड़िबो सेईटा कहिथिले के कार्ल मार्क्स बुझिले ना बुझि गले ना ओके मैम थैंक यू हैला आको एम्ति मन रखिबे कार्ल मार्क्स के कौन कहिले ना एक्सप्लॉइट करचंती मैनेजमेंट सेति पई वर्कर माने स्ट्रांग स्टेप नबा को पड़िबो स्ट्रांग स्टेप कोन करिवे ना मैनेजमेंट को से अनुसार मैनेजमेंट मध्ये से अनुसार कोऑपरेट करिवो वर्कर से हैला जिबा नेक्स्ट जिबा
ଆଜ୍ଞା ओके चलंतु नेक्स्ट है हमर पढ़िबा कोन वेट अ मोमेंट आपनको इंडस्ट्रियल रिलेशन ओवर देन वी विल डिस्कस व्हाट कलेक्टिव बार्गेनिंग जोटा मु कलेक्टिव बार्गेनिंग कहि बहुत कहिलेनी आज कलेक्टिव बार्गेनिंग सहित डब्ल्यूपीएम मध्ये कंप्लीट करतबा कारण हम पाखरे टाइम बेसी नाही हैला कलेक्टिव बार्गेनिंग हैला समस्त जोटा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन रो सब अप्रोच कहिला काहा को फोकस कला कलेक्टिव बार्गेनिंग को जो कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग सी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्लियरली देखि परिबे इति collective bargaining is the process in which the representative of labor organization and the representative of a business organization meet and negotiate कौन करंती मिसंती कौन करंती negotiate करंती कौन negotiate करंती ना the contract and agreement of towards the worker and towards the industries माने कौन बुझिले collective bargaining होची गोटे एमती जिंस collective bargaining is a bipartite machinery bipartite and tripartite मैं starting रो आपण मान को कहै छी bipartite means where two persons will involve tripartite means where government will interfere bipartite machinery means management and worker दुईटा इन्वॉल्व थिले tripartite आसी गला माने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आसीबो collective bargaining and WPM workers participation in management एटी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हबो नाही it is there bipartite machinery whatever may be the problem whatever may be the dispute it is there in the industry the dispute the problem it will solve based on the management and worker interaction दुई जन को भितर हम इंटरेक्शन करके सॉर्ट आउट करिबा तो केमिति करिबा एटी के आसीबो ना जत्ते सब बार्गेनिंग हबो जत्ते सब इंटरेक्शन हबो जत्ते सब डिस्प्यूट हबो जत्ते सब प्रॉब्लम हबो के आसीबो ना बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर ऑर्गेनाइजेशन ता माने के ट्रेड यूनियन रो लीडर आसीबो लेबर ऑर्गेनाइजेशन ता माने ट्रेड यूनियन को बिलोंग कला ते ट्रेड यूनियन ला लीडर आसीबो अदर साइड रे के आसीबो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ता माने कार आसीबो ना दा हमर मैनेजमेंट बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट सम पीपल विल कम रिप्रेजेंटेटिव जन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अछंती हां टॉप लेवल रे 50 जन अछंती कोन 50 जन आसीबे ना तांको भितरु जने की दुई जन रिप्रेजेंटेटिव आसीबे एपटु जने दुई जन रिप्रेजेंटेटिव जिबे जाय की समान नेगोशिएट करिवे बार्गेनिंग करिवे they will negotiate bargaining all those things no the factors related to workers the factors related to business the factor related to industry कौन bargaining करिवे कौन negotiate करिवे bargaining negotiate towards the wages and salary it including bonus it including basically incentive increment facility benefit job security health safety welfare every facility and benefit towards the workers काहे की बोनस हमको 20% दिया जिवो नाही कोन पई हमर एथरा 5000 की 2000 की 100 इंक्रीमेंट करा जिवो नाही काहे की हमको टाइम रे सैलरी दिया वेजेस दिया गला नाही काहे की ताको रिट्रेंचमेंट टर्मिनेट करा गला विदाउट एनी रीजन काहे की मते ट्रांसफर करा गला स्टे यूनिट पई बोली काहे की मते प्रमोशन करा गला नी ताको प्रमोशन करा गला why the systematic promotion is not there so these are the different terms it is there in the industry that's why related towards the worker related towards the employee that's why different type of dispute it occur in that particular place so to sort out all this problem ei सब problem को sort out करिबा पई हमें कोन अडॉप्ट कले कलेक्टिव बार्गेनिंग करिबा के बार्गेनिंग करिबो मैनेजमेंट आ वर्कर भितरे कितने प्रकार बार्गेनिंग अच्छी कर परिबा हमें see the types of collective bargaining there are various kind of collective bargaining अछि जेमति कि हमें एठी कहबा it is broadly classified into four category कोन ना गोटे हला डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग देन असला आपनकर कोन ना प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग called as a consecutive bargaining to take you fast bargaining ta distributive bargaining and consecutive bargaining माने कोन सी हमर कलेक्टिव बार्गेनिंग ता के करबो मैनेजमेंट और वर्कर भितर जोटा कि हम प्रोसेस टा ना पढिबा मैनेजमेंट वर्कर भितर कलेक्टिव बार्गेनिंग करबे बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर तो एठी कोन हबो ना देखंतु
ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ପାଇଁ in front of worker and worker union ରହିବ in front of management ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି नो ମୁଁ ସବୁବେଳେ superior position ରେ ରହିବି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ହବା ଦରକାର ମୁଁ ଯାହା ମାନେ my rules my regulations my view my everything that must be means what accept by the workers ସେମାନେ accept କରିବେ वर्कर कौन कहबो हां आमे कहीं ता कथा सुनिबो मैनेजमेंट कथा आमे जहा कहबो as per our rules regulation as per our need and expectations ना मैनेजमेंट हैव टू एक्सेप्ट इट मैनेजमेंट एक्सेप्ट करिवो ताको एई दुईटा एटीट्यूड नै कि आसीबो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आसीबो एडी को बार्गेनिंग डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कंज्यूकेटिव बार्गेनिंग कथा म कहूची हला दुई जन एई टाइप रो एटीट्यूड नै कि आसीबो दुई जन का कहबे कि विन विन सिचुएशन विन विन माने कोन वर्कर कहबो आई विल बी देयर आई शुड बी then in a winner amar jaha sabu ame jaha sabu kahibu seda management accept kariba and ame winning condition winning situation re rahibo management kahiba kona mu jaha kahibi worker accept kariba mu winner situation re rahibo so ei dui jon ko win win situation mu se kahibo mu win hebi ye kahibo mu win hebi is it possible duita ko winning hei paribe not possible to kon kara jauchi na ei type ro jodi attitude management और workers dharile so worker wanted to be in a winning situation and management also tried to be in a winning situation so this kind of bargaining it is not successful it is completely fail एमिति जो bargaining का कोन वे इंडस्ट्री सब वाला फेल्योर वे तो सेति पय कोन करिबा तो जण को टिके तो कंसीडर करिया को पड़िबो so this is the distributive a type of bargaining though workers having some kind of attitude management having also some kind of attitude though both the party always try to be in a win-win situation so these are the bargaining it is completely fail at the industry so इति ame kon kale integrative bargaining or cooperative bargaining जो टिके लिखा जाय छी cooperative word ही ame सुनी पाचे cooperative माने कोन supportive attitude cooperative mane kono it is one kind of helping supporting attitude and supporting attitude nei ki du jona kasibe eti kon karibo na management try to support the rules the whatever may be the condition of the workers and workers also try to help and support whatever may be the condition by the management so both the party having a positive attitude and cooperative attitude towards each other दुई जन सहित कोऑपरेटिव और सपोर्टिव एटीट्यूड नै कि आसीबे त माने डी कोना हो ठीक अछि मैनेजमेंट विनर हैला हम लूजर हम तो चलिबो किछि नै हमर तो इंडस्ट्री मैनेजमेंट एडी कोना भाबिबो वर्कर्स विनर हैला तो तार कथा रहला तो ठीक अछि मोर तो वर्कर मोर तो इंडस्ट्री मो से पॉइंट रे लूज करले कोन हैला सो विनर सिचुएशन जदी नै कि आसीबे दुई जन को कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड न नै कि ताहले इंडस्ट्री हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करि परिबो जोटा कि कहूची हमर कोन इंटीग्रेटिव एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड बहुत टाइम रे दुई जन को केही कंसीडर करंतिनी से कहबो मो कथा रहइबो से कहबो मो कथा रहइबो जोटा कि इंडस्ट्री गुटे बड़ डिस्प्यूट हेकरी स्ट्राइक लॉकआउट पर्यंत इंडस्ट्री कोन करची लीड करची हैला सो तापर असला कोन हमर ना प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग थर्ड नंबर बार्गेनिंग ताला प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग जोटी केटा देखा जाउ हैला प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कोन कहूची ना एटी मैनेजमेंट कहबो वर्कर को देखो मु तो तमो डिमांड फुलफिल करिबी आई एम एग्री फॉर दैट बट you have to increase the production and productivity if more production is there more productivity is there so based on the production productivity I will fulfill your demand मु आपो तमो मानकर डिमांड को फुलफिल करबी कारण मोर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़िबो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हबो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हबो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप हबो सो बेसिंग ऑन दिस आई विल फुलफिल योर डिमांड प्रोडक्टिविटी जते बढ़िबो तो सेइडा थिबो कहार कंडीशन सेही बार्गेनिंग नै कि आसीबो मैनेजमेंट नै कि आसीबो एइडो कोन होबो कंपोजिट बार्गेनिंग कोन कहूची वर्कर एई पर्टिकुलर एरिया रे वर्कर कहूची कि ना समति केमति हबो आमे प्रोडक्शन करिवो हां आमे तो काम करूछु वी आर देयर फॉर द इंडस्ट्री and we are for that we are giving our loyalty commitment dedication whatever may be is there but first you fulfill our demand then we have to do all those things towards the industry first our demand fulfill haba then ame industry pai kichi gote ame sabu kichi ame production badaibu but industry pai boli
आमर आगे डिमांड फुलफिल करा जाओ ना आमे आमे एडी से कोन भाबुची ना ना खाली आमे खाली इंडस्ट्री पई अछु जोटा कि आमे खाली इंडस्ट्री पई बोली आमे डेडिकेट अछु बट इंडस्ट्री आम पई बोली थी नहीं सो कंपोजिट बार्गेनिंग कोची नो वी विल डू एवरीथिंग फॉर द इंडस्ट्री बट इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू फुलफिल आवर डिमांड फर्स्ट हम डिमांड फर्स्ट रे तुमे फुलफिल करबो ए टाइप रो कोन करंती बार्गेनिंग करा जाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग इट इज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो थी कि जोटा कि बार्गेनिंग करा जाए फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन कहूची जो टाइपटा हमें अडॉप्ट कले कि जहां भी हमें नीड अनुसार हमें बार्गेनिंग करबा ए प्रोसेस नै कि हमें बार्गेनिंग करू कोन फर्स्ट है प्रिपरेटरी फेज कोन ना बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट अपने पिक्चर ही एनालिसिस करि परबे ता माने कोन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से फर्स्ट इज द प्रिपरेटरी फेज इट मींस बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट the representative will be there and behalf of the workers the representative will be there and they will meet and they will negotiate to each other जोटा कि negotiate करी जोटा कि तमे माने आपण माने एठी देखुचंती preparatory phase ता बिहाफ जने आसीची आ बिहाफ जने आसीची आसिकिरी कोन कले दुई जन को negotiate कले डिमांड कोन आछि वर्कर मानकर ना हमको 20% बोनस दिया जाओ 20% बोनस ताड अधिक दिया हे परिबन पढिबा बोनस फैक्टर्स हला मैनेजमेंट केते कहूची मु 10% बोनस देबी वर्कर्स कोन कहउछन 20% बोनस डिमांड हैला मैनेज वर्कर्स कोन कहउची ता छडा हमको कोन दिया जाऊ ना ता छडा हमको इंक्रीमेंट दिया जाऊ हमर इंक्रीमेंट करा जाऊ हैला इंक्रीमेंट केते ना हमर वेजेस रे 3000 इंक्रीमेंट करा जाऊ बढ़ा जाऊ हमर वेजेस तो एठी कोन हैला तकर दुईटा डिमांड आसिला वर्कर्स यूनियन डिमांड नै किरी मैनेजमेंट यूनियन आसा प्रिपरेटरी फेज रे दुई जन से डिस्कशन कले एठी वर्कर डिमांड कोन भल से बुझिबे वर्कर डिमांड कोन 20% बोनस विथ 3000 इंक्रीमेंट वर्कर्स मानकर मैनेजमेंट रा कोन हला मैनेजमेंट कहला हम 10% देबी बोनस विथ 1000 देबी इंक्रीमेंट हे गला चलो चलले दि जन आगो डिस्कशन कर देले पळेले डिस्कशन फेज कोन मैनेजमेंट जो व्यू कहला वर्कर्स रा डिमांड इज दिस management said this now worker the leader of the trade union will discuss with the association तम worker मानको से डिस्कशन जाई करिवो हला मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेटिव से जाई कि मैनेजमेंट से डिस्कशन करिवो आ एठी वर्कर मानको डिमांड जो लोक आसे रिप्रेजेंटेटिव से कोन एक्सेप्ट कर देबो कि तो असंभव कथा कारण मैनेजमेंट ऑलरेडी गोटे डिसीजन नै छि तो एठी कोन करिवो एई जो सी कहला मैनेजमेंट कोन कहला से ट्रेड यूनियन रो लीडर जाई कि वर्कर्स मानको से डिस्कशन करिवो देन ट्रेड यूनियन कोन कहला सो मैनेजमेंट रो रिप्रेजेंटेटिव जाई कि मैनेजमेंट से डिस्कशन करिवो दिस इज अ डिस्कशन फेज बोले से बुझिबे हैला डिस्कशन करिवो डिस्कशन सरी गला देन आसले प्रपोजल नै करी दुई जन प्रपोजल अगेन आसले दुई जन के वर्कर्स माने तांकर व्यू देले मैनेजमेंट तांकर व्यू देले देखि दुई जन अगेन प्रपोजल नै कि आसले कोन ना गोटे सुंदर भाबर अट्रैक्टिव प्रपोजल नै कि दुई जन आसी पहुंचीबे पहुंची कि कोन करिवे ना से जो प्रपोजल नै कि आसले सेठी दुई जन से बार्गेनिंग करिवे बार्गेनिंग कोन एटी मैनेजमेंट रा कोन अछि 10% विथ 1000 इंक्रीमेंट वर्कर्स रा कोन अछि 20% विथ 3000 इंक्रीमेंट तो दुई जन पूरा बार्गेनिंग करिवे दुई जन चाहबे कि हम विन विन सिचुएशन रे रहबो से कहबो मोर डिमांड फुलफिल हो ये कहबो मोर कथा रहइबो बस तो फाइनली कोन हबो जिकाटना ये परे सेटलमेंट फेज को आसीबे कोन हबो चलो तमरो नै मोर नै 15% बोनस दबो विथ 2000 इंक्रीमेंट दिया जबो हला दिस इज द सेटलमेंट सेटा से माइंड सेट करी के आसीबो कथाई के आसीबो वर्कर मान को सहित नहले अगेन आउचरे जिबे से माने डिस्कशन फेज को हां जोटा कि मैनेजमेंट भी सेटा पय बोले माइंड सेट करी के आसीबो जदी सेटा माइंड सेट हैला नै ताले अगेन से माने डिस्कशन फेज को जिबे एई फेज को पुनी जिबे डिस्कशन फेज को से माने पुनी अगेन कहबे सेटा हमें मानिबा ना मानिबानी सो कारण से माने रिप्रेजेंटेटिव दे आर नॉट द डिसीजन अथॉरिटी they are not they cannot take the decision they only can represent behalf of the workers and behalf of the management decision naba capacity la worker union ra management association ra right so say do kon hela samane mindset kari ke astibe settlement korte win win ho ki win lose ho ki jaha ho hela maybe productivity bargaining he pare consecutive bargaining he pare cooperative bargaining he pare jaha bhi pare then kon hobo once settlement then agreement करता agreement कहा भीतर होगा agreement between the management and workers
मैनेजमेंट वर्कर भीतर आ कोन मु जहा कहली सेटा वर्बली न मु तो आज कहितबी काली मना करतबी ना मु तो कहिनी मैनेजमेंट कहबो ना मु तो कहिनी मु केबे कहितली मु कहि नथिली पूरा डिनाई कर देबो से कोन करबे आपण so whatever may be the discussion whatever may be the means what step it is there in that particular meeting then everything it must be there in a pen and paper agreement everything must be there in a means what formal work must be should be there formal work means what no it must be agreement and based on the pen and paper and that agreement jota ki ame kon kariba once agreement he gala then we have to enforcing the agreement means we will implement that agreement so agreement ko ame implement kari daba then ame kon kariba jete amar bonus term asiba 15% bonus daba and se answer ame kon kariba 2000 increment ko implement kari daba once agreement over then implementation start so basing on this ethi kote katha hala ji asithibo behalf of the management see trade union को convince करियो it is not a easy task no trade union को convince करियो it is not a means हमें कहबा नहीं it is गोटे बहुत सहज काम worker को convince करिबा हजार हजार worker को convince करिबा trade union को देखंतु एई जो हमर आस्तेला मझरे हमर ड्राइवर एसोसिएशन सब पूरा बंद कर देथिले केतेटा दफा नै कि एग्रीमेंट केतेटा दफा नै कि आस्तिले कि हमको इंश्योरेंस दिया जाऊ हमको ये दिया जाऊ कोन कहिला प्रोटेक्शन दिया जाऊ हमको हेल्थ फैसिलिटी दिया जाऊ हम फैमिली प्रोटेक्शन दिया जाऊ कोन 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 15 ना 10 दफा नै कि आस्तिले ता भितरु एई ना जस्ट काली ना पदन देखिबे गवर्नमेंट बहुत सारा से मानकर सब प्रॉब्लम नले से माने नेक्स्ट टाइम से माने आ गोटे बड़ धरणर से माने आसते स्ट्राइक करबा पई बोली जोटा कि से स्ट्राइक ता गवर्नमेंट भी टॉलरेट करि पाना थांता ताको गोटे टाइम दिया होइतिला दुई जना को माइंड सेटल कले दुई जना का एग्रीमेंट कले लास्ट काली ना पदिन गत काली के पदिन देखिबे गवर्नमेंट गोटे बिग अनाउंसमेंट करछि ड्राइवर एसोसिएशन मानक पई राइट सो आको कहा जाय बार्गेनिंग एमान को कन्विंस करबा ते इजी नो और एमान को सब डिमांड भी फुलफिल करबा ते इजी नो सती के गवर्नमेंट पाखरी जदी हमें कहिबा आगो को जिबा हमें डिस्प्यूट रे पड़ीबा टाइप ऑफ स्ट्राइक रे तो गवर्नमेंट पाखरी भी सती के पावर थिबार अछि मान को डिमांड को फुलफिल करिया पई ऑर्गेनाइजेशन पाखरे सती के कैपेसिटी थिबार अछि मान को डिमांड फुलफिल करिया पई सो जी आसीबे ना नेगोशिएट पर्सन से जो लोकटा आसी को बार्गेनिंग पर्सन नेगोशिएट पर्सन दैट पर्सन मस्ट बी that much of competent person that much of efficient person that much of effective person no so skill wise knowledge wise talent wise no experience wise everything wise that person must be excellent person extraordinary person must be there behalf of the management je represent କରୁଛି behalf of the government je represent କରୁଛି so से अनुसार कौन हबो बार्गेनिंग का सक्सेसफुल ले परिबो नले कौन हबो always and every time collective bargaining it will be fail जतले गवर्नमेंट हम रूलिंग पार्टी अनुसार जे का साथ बार्गेनिंग करछे गवर्नमेंट को बार्गेनिंग करछे इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बार्गेनिंग करछे एटा के हम पढिबा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक रे बुझि गेल पिला माने स्टूडेंट्स बुझिले बुझिला कार किछि डाउट पूरा क्लियर पूरा क्लियर हो नहीं को केम जानिबी यस मैम ओके 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 फाइन तो चलो नेक्स्ट डिस्कशन करबा कोन कलेक्टिव बार्गेनिंग सो व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग मैम हेलो हां कोंतु डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग मैम आउथरे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग लेखा अछि देखै दिउ छ भल से बुझ पारिबे वेट अ मिनट अच्छा फर्स्ट बार्गेनिंग ता बुझी पाले डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग देखो बेटी कौन लिखा है कंज्यूगेटिव बार्गेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग both the party try to maximize their representative gains they try to settle economic issues ता माने दुई जना को एठी कोन करथिबे मु कहिबी मोर डिमांड फुलफिल हबो के मोहली वर्कर मैनेजमेंट कहबो ता डिमांड रे फुलफिल हबो मैनेजमेंट कहबो जत्ते पारिबी मु कम देबी एमान को डिमांड अछि तो जत्ते पारिबी कम देबी वर्कर कहबो जत्ते पारिबी मु एठी बार्गेनिंग करी अधिक आनी हैला एई एटीट्यूड दुई जना को नै कि आसीबे रिलेटेड टू वेजेस हो रिलेटेड टू बेनिफिट्स हो रिलेटेड टू फाइनेंशियल बेनिफिट हो कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हो हैला एठी वर्कर कहबो मु
मैनेजमेंट सहित पूरा बार्गेनिंग करिकरी बहु किछि एठी आमे अचीव करतबा ता माने आमो डिमांड फुलफिल हो वर्कर को मैनेजमेंट को किछि देबेनी एई दुई जन एटीट्यूड नै के आसीबे विन 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 सिचुएशन मैनेजमेंट वांटेड टू बी इन ए विन विन सिचुएशन मींस व्हाट किछि वर्कर को देबेनी पूरा एम्प्टी बार्गेनिंग करिके आसीबी वर्कर कहबो ट्राई टू बी इन ए विन विन विनिंग सिचुएशन मु एमिति बार्गेनिंग करिबी मैनेजमेंट तो सब किछि हमर डिमांड अनुसार फुलफिल करिबी दुई जनकर एई एटीट्यूड नै के आसीबे जोथरे कि पूरा बार्गेनिंग प्रोसेस फेल सक्सेसफुल हेई परिबो नाही एइठा दो ए टाइप रो एडी गवर्नमेंट कोन कहबो गवर्नमेंट कहबो 15 दफा देके ड्राइविंग एसोसिएशन आछि तो मु तारो गोटे भी देबिनी ड्राइविंग ड्राइवर एसोसिएशन कोन कह 15 टा दफा जदी फुलफिल न होला नेक्स्ट टाइम तमे हमकु बुझ देखिबो ता माने कोन हबो दुई जने एटीट्यूड डेवलप हेले जहा हबो ओडिसा रो सिचुएशन आपण मान जानचंती सेटु कोन हबो एइटा एई एटीट्यूड एइटा हला गोटे वन टाइप ऑफ फेल्युअर एटीट्यूड तो सेठी पा हमें कोन करले सेकंड टाको हमें करले इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और कोऑपरेटिव बार्गेनिंग जोटा कि ना गवर्नमेंट संगे संगे कालना पदिन डिक्लेयर करछि से मानक पय बुझी गले ना एई ना बुझिले आगे मैम हैला तो चलो ओके डब्ल्यूपीएम चलंतु वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कौन शिविर कौन मान रखिबे व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स इंपोर्टेंस जोटा कि आपण पढिले कौन से ऑब्जेक्टिव नीड्स इंपोर्टेंस हमें कौन बार्गेनिंग करछे वेजेस बोनस ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर जिते मन गसला से लिखि देबे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग workers participation in management माने कौन workers participation in management means it is the involvement of workers in the management decision making process गोटे सिंपल वर्ड रे मन रखिबे जत्ते बेले वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ता माने कोन जत्ते बेले मैनेजमेंट किछि डिसीजन नबा को चाहूची at that particular moment the management will involve to workers association the worker man हजार जन worker आसी बसिबे कि decision making process रे ना के representative of the trade union so before taking the decision related to industry the management will participate to the workers association and basing on this the management and worker both will take the decision दुई जना में मिसी के डिसीजन नबा किए ना मैनेजमेंट एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसीजन को रिलेटेड डिसीजन वेजेस रिलेटेड डिसीजन बोनस रिलेटेड डिसीजन ग्रेच्युटी रिलेटेड प्रोविडेंट फंड रिलेटेड टीए डीए एचआरए रिलेटेड डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेनिंग डिसीजन रिलेटेड टू ट्रांसफर डिसीजन रिलेटेड टू रिट्रेंचमेंट जत्ते एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रिलेटेड टू वर्कर जत्ते सब ऑर्गेनाइजेशन रो वर्कर रिलेटेड डिसीजन तो कौन होबो एठी एई जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो जदी मैनेजमेंट वर्कर को पचारि के डिसीजन ता नबो द फर्दर डिस्प्यूट शुड नॉट बी ऑकर इन द इंडस्ट्री फर्दर डिस्प्यूट होबनी देखंतु डिसीजन ता ठीक है पारे डिसीजन ता भूल है पारे इट मे बी बेस्ट और इट मे बी वर्स्ट इन द फ्यूचर मोमेंट इन द फर्दर टाइम तो कौन हम एठी कही आ का को ब्लेम करि परिबेनी वर्कर कहिबनी कि तू डिसीजन नै छिलो मैनेजमेंट को तुम डिसीजन नै छिलो देखो हम जेति के सफर होचु एटा वर्कर्स कहि परिबनी मैनेजमेंट कहि परिबनी देखे कि मैनेजमेंट कहिबनी देखे तम मानक पई बोली मु जेति के सफर होचि केही का को कहिबनी कारण दुई जन मिसी के डिसीजन नै छथि इट मे बी गुड और इट मे बी वर्स्ट व्हाटएवर मे बी द थिंग्स सफर हेबे दुई जन सफर हेबे भलो हबो दुई जन भलो हेबे सो एटा गुटी नया कांसेप्ट अडॉप्ट करा गला कोन ना टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी to maintain industrial democracy हमको ए सब ए द्वारा हमर कोन हे परिबो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर मैनेजमेंट वर्कर भीतर को हार्मोनियस रिलेशन को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हे परिबो it increase to productivity it increase to profit it increase to growth it increase to development of the organization as well as the worker right it maintain industrial harmony mo already कहली peace and harmony शांति श्रृंखला मेंटेन करिपा it develop industrial democracy माने कोन जेटा कि आमे कहबा autocratic and democratic autocratic allow only the management will take the decision the worker will not interfere any kind of decision making process no
That is the autocracy, autocratic kind of things adopted by the industry. But democracy means what? The whatever may be the step the management will take, it is a cooperative, it is a basically mutual understanding by the worker plus the management. So it is the one kind of democracy I maintain by industry, cooperative democracy attitude, not autocratic. No? So democracy I adopt kari pariba. Worker माने कौन करिवे ता द्वारा ता सेति पई बोली ना समान जो रेजिस्टेंस करथले जहां हमें चेंज आछि जहां हमें डेवलपमेंट करिबा को मैनेजमेंट चाहूची वर्कर माने रेजिस्ट करथले माने कोन डिनाई करथले नॉट एक्सेप्टेड by the workers any kind of things, any kind of step wanted to take by the management, the worker completely not accept it. सब बड़े worker कौन कला oppose कला एठी oppose करि परिबनी सब सब जिंस workers माने accept करिवे resist करिवेनी आउ right. तो सेडु कोन हबो creativity innovation सब बढ़िबो and organization कोन हबो भल्ला भाबरे डेवलप होई परिबो. Organization sustainability can be possible, growth expansion everything can be possible and exploitation industry पूरा zero हो जिवो. एई सब कारण को नेकरी workers participation management रा हमरो that much, that's why workers participation management is that much important for the industry, right. हैला तो चलंतु एठी हमें कोन करिबा कोले आमे केमिति करिया ए जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहिले कि आमे को लेवल रे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करबा. व्हाट इज द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. गोटे आसला सजेशन स्कीम ध्यान रे सुनिबे खाली सजेशन स्कीम कोन सी एठी कोन करबो मैनेजमेंट. The management have giving that much of flexibility towards the worker. The worker can share their views, ideas. The worker can share their any kind of knowledge in front of the management. Suggestion. They are free to give their suggestion. They are free to give share their idea in front of the management. Suggestion scheme jota ki ame kohuche. The management want to take some decision. Kichi gote decision naba ko chahunchenti. Edu worker mane pura free. They can give that. They can share their idea. They can share their views. They can share their suggestion in front of the management. आज का डेट रे आउरी एमती डेवलप करा जाय छी कि गोटे गोटे इंडस्ट्री सजेशन बॉक्स रखा जाउची राइट. सजेशन बॉक्स थाउची जोटा कि सजेशन बॉक्स फॉर द एम्प्लॉइज इंटरनल पीपल, सजेशन बॉक्स फॉर द कस्टमर आल्सो. धरंतु आपण किछि गोटे प्रॉब्लम फेस कले एंड यू वांट टू गिव सम काइंड ऑफ फीडबैक एंड सजेशन, देन सेडी आपण को फीडबैक सजेशन गोटे फॉर्म थिबो सेटा आपण लेखि गिरी सेडी आपण सेई जो बॉक्स थिबो सेडी आपण कोन करि परिबे पुट करि परिबे. से बॉक्स रे आपण ताकू तो ऑर्गेनाइजेशन कोन करिवो. सो सेई जो देखिबो कोन कोन व्हाट आर द वेरी गुड सजेशन, व्हाट आर द गुड सजेशन said by the customer, said by the people, ताकू नेकरी से कोन करिवो ताकू ट्राई करिवो इंप्लीमेंट करिया पे. जदी किछि सेमति किछि भलो सजेशन अछि तो by the management, by the employee and by the customer also. So it is the one kind of open door policy we can say. Now management welcome करूची का को ना welcoming to the customers, welcoming to the employee, internal and external people. You can share your views, good suggestions. Basing on this we can implement. Basing on this we can take this step. So this is the suggestion scheme, right? Apart from these हम आउ कोन अडॉप्ट करि परिबा एई अनुसार हम गोटे पार्टिसिपेट करि परिबे वर्कर्स माने मैनेजमेंट सहित आउ हला वर्क कमिटी अनुसार हम करि परिबा. वर्क कमिटी कोन देखंतु वर्क कमिटी डेवलप होइतिला 1947 रे लेखा आइछि साइट रे मु ईयर आगे लेखा जाइछि. वर्क कमिटी that developed by that adopted by Industrial Dispute Act 1947. सेठी भी मु अगेन एटा को पढाइबी. The work committee adopted at the year of 1947 based on the Industrial Dispute. Industrial Dispute Act 1947 रे आसला सेठी work committee adopt करा गला. वर्क कमिटी कोड ही अडॉप्ट करि परिबो कि वर्क कमिटी को माने कोन हम डेवलप करि परिबा का किए सिटी पा एलिजिबल. As per the Industrial Dispute Act 1947, industry can form a work committee. के form करिबो ना where 100 or more than 100 workers are working in a particular industry, then we can form a work committee. गोटे इंडस्ट्री रे 100 कि 100 रु अधिक वर्कर काम करूचंती सेडी गोटे हम वर्क कमिटी फॉर्मेशन करबा. So work committee रे काम कोन हबो ना the responsibility of the work committee to maintain harmonious relation between workers and management. से वर्क कमिटी जो फॉर्मेशन आमे करिबा से वर्क कमिटी रहिबे किए ना इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर. देखंतु फर्स्ट कंडीशन हला कोन
प्रथम कंडीशन है वर्क कमिटी अडॉप्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रे सेठी भी मु अगेन एटा को कहबी हैला फर्स्ट थिंग सेकंड है वर्क कमिटी कोठी एप्लीकेबल हे परिबो ना जो इंडस्ट्री रे 100 रु अधिक लोक काम करछन्ती वर्कर्स काम करछन्ती से वर्क कमिटी रे केरो कमिटी मानते डिफरेंट मोर देन 1 पर्सन थिबो डेफिनेटली कमिटी ताको सेति पई कहआ जाउची से कमिटी रे के रहइबो ना इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स फॉर्म ए वर्क कमिटी ता माने इक्वल दुई जन मैनेजमेंट रो आसले दुई जन वर्कर रो आसीबे जने मैनेजमेंट रो आसले जने वर्कर्स रो आसीबो तीन जन मैनेजमेंट रो आसले तीन जन वर्कर साइड रो आसीबे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर आसीबे गोटे फॉर्म करिवे वर्क कमिटी ताकर काम कोन टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन द इंडस्ट्री से माने वर्क कमिटी को एरिया रे ध्यान दबो को एरिया को कंट्रोल करिवो को एरिया को कंट्रोल करिवोनी सेटा गोटे पूरा लिस्ट अछि आपनकर वर्क कमिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रे जेमिति कि फॉर एग्जांपल वर्क कमिटी सब किछ डील करिवो एक्सेप्ट फाइनेंशियल इकोनॉमिक फैक्टर जमती कि हमें कहबा इकोनॉमिक जते सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अछि सेठी वर्क कमिटी इन्वॉल्व कहबनी जमती कि नॉट डील बाय द वर्क कमिटी कोन डील करबनी वेजेस डील करबनी अलाउंसेस डील करबनी बोनस डील करबनी हां जमती कि हमें कहबा कि ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड ए सब रिलेटेड कोनोसी ये को डील करबो नाही तार गोटे पूरा लिस्ट दिया जाय ताले डील कोन करबो वर्क कमिटी डील करबो जमती कि कंडीशन ऑफ वर्क जेमती कि हमें कहबा सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर्स वर्किंग कंडीशन जोटा कि हमें फैक्ट्री एक्ट ऑलरेडी पढ़ी के आसिले एई सब को कोन करबो वर्क कमिटी डील करी बट द वर्क कमिटी विल नॉट डील ऑल द फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेमिति कोन करबो वर्क कमिटी मेंटेन करबो हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वर्क कमिटी आई थिंक कि एटा आपण मान को भलो से क्लियर हो जाइथिबो देन चलंतु जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल केबे अडॉप्ट करला ना जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल अडॉप्ट करला जेएमसी एट द ईयर ऑफ 1958 now what is the responsibility of the joint management council this is a different level of participation कोठी कोटा एप्लीकेबल हो कोठी को इंडस्ट्री कोटा यूज हो सेटा को नै कि आपण सेठी करिवे सब आग गोटे इंडस्ट्री एप्लीकेबल हबनी जेमिति कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कोठी अडॉप्ट हो जेटा 1958 रे आसला ना जेएमसी where two or more well established trade unions are there ता माने गोटी इंडस्ट्री जदि गोटे रु अधिक टू और मोर दुईटा रु अधिक ट्रेड यूनियन फॉर्म करूचंती ट्रेड यूनियन एक्टिवली पार्टिसिपेट करूचंती फॉर एग्जांपल हम एटी कहबा धरंतु नालको रे धरंतु इना फॉर एग्जांपल मो कहूची पांचटा ट्रेड यूनियन अचंती किए ना एआईटीसी अछि आईएनटीसी अछि सीटू अछि एचएमएस अछि बीएमएस अछि हैला पांचटा ट्रेड यूनियन अचंती एक्टिवली पार्टिसिपेट करचंती कोन कहली एटी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टिव ट्रेड यूनियन अचंती गोटे इंडस्ट्री मोर देन टू और मोर देन टू सेठी कोन हबो जेएमसी फॉर्म करा जिवो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फॉर्म हबो 1958 रे एटा को अडॉप्ट करा जायछि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल रो काम कोन हबो एटी ना जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल हैला बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट बिहाफ ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन बिहाफ रो आसीबे representative management ru behalf ru asibe representative so behalf of the workers behalf of the management jemti work committee ame formation करथिले एटी सेमति गोटे committee formation हबो जोटा कि joint management council ता ना को आजिबो so joint management council equal number of representative behalf of the worker behalf of the management केते रहिबे not less than 6 not more than 12 in that particular committee ता माने कोन हैला 6 जन रु कम हेबेनी 12 जन रु अधिक हेबेनी 6 जन रहिले 6 persons are there in the joint management council so behalf of management 3 behalf of worker 3 जदि रहिले 8 जन behalf of management 4 behalf of worker 4 so basing on this they will maintain a committee they will form a committee and to maintain harmonious relation among the trade union those are there in the industries right and the decision will be they will take the decision on the basis of consensus माने कोन ना to based on the agreement mutual understanding agreement विषय रे एमती नाही कि गोटे यूनियन जहा कोची समस्त मानिबे जे होची सबटु पावरफुल यूनियन सेमते बिल्कुल न एठी सेहिति पई फॉर्म करा जाउची सब यूनियन भितरे गोटे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करा जिवो आ सब जहा भी डिसीजन हबो एग्रीमेंट वाइज मानकर कोऑपरेशन वाइज डिसीजन निया जिवो
So this is the meaning of joint management council. Se answer ame kon kari pariba na industry peace maintain kari pariba within the industry. Third party interference should not be there. Government interference dekho to bilkul karuni. Government ra kounasi interference hi nai jeti ame collective bargaining और WPM विषय रे discussion already kaleni ki industrial relation bitare hela. So this is the joint management council. Pila mane buझिले dita ago factor kichi doubt students? No No, doubt, ma'am. पूरा बुझिले ना? Yes, ma'am. Yes. ओके तापर आसला कोन आ गोटे खाली दुची तापर स्टॉप कर देबी हैला. बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन केते बेले आसला ना बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन एट द ईयर ऑफ 1970 हैला. एट द ईयर ऑफ 1970 अडॉप्टेड बाय द बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन. एडी कोन करा गला सी डिफरेंट बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन हैला कि डिफरेंट पब्लिक सेक्टर selected public sector, no, the director of selected public sector enterprises and the nationalized bank director. तामाने एटी कौन करा गला ना एटी हमें बोर्ड का कोहिले गुटे बोर्ड लेवल रे पार्टिसिपेशन हैला. बोर्ड लेवल रे पार्टिसिपेशन कोन ना जत्ते सबु थिला द public sector enterprises, selected public sector enterprises, the director of this public sector enterprises and the director of the nationalized bank semane gote कोन कले यूनियन कले जते सब पब्लिक सेक्टर डायरेक्टर आउ हेले बैंक रो डायरेक्टर माने मिसी की गोटे एसोसिएशन कले हैला. गोटे यूनियन कले गोटे कोन कहले गोटे एंड एपट साइड रे के रहले ऑल द ट्रेड यूनियंस. गोटे साइड रे रहले ऑल द ट्रेड यूनियंस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक as well as the public sector enterprises, the all the trade unions, and other side re all the directors of the nationalized bank as well as the public sector enterprises. तामाने कौन है लाइटी गोटे धरंतु फॉर एग्जांपल धरंतु नेशनलाइज्ड बैंक एसबीआई रे कोनोसी प्रकार कॉन्फ्लिक्ट हैला. तामाने केमति से कॉन्फ्लिक्ट में सॉर्ट आउट करबा जते सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिले behalf of the nationalized bank and public sector enterprises behalf of the what to sort out the problem, and behalf of the trade union leader will participate in that particular area. तो सेडू कोन हेबे से माने डिस्कशन करके से प्रॉब्लम दा सॉर्ट आउट करिवे हैला. एटा थिला से मानकर ऑब्जेक्टिव कहार बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन. धरंतु पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रो को गोटे सेक्टर रे को गोटे बैंक रे को गोटे एरिया रे जोटी भी कोनोसी प्रकार डिस्प्यूट हैला. सो बिहाफ ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरिया द डायरेक्टर विल कम एंड बिहाफ ऑफ द व्हाट द ट्रेड यूनियन द लीडर विल पार्टिसिपेट. Basing on this they will sort out the problem. But what happened, so this kind of participation is जो board level participation दा एतेटा सक्सेसफुल हैला नाही कापा बहुत फेलियर हैला. काहे कि फेलियर हैला कारण जते सब स्ट्राइक हैला माने सॉर्ट आउट करि पालेनी. काहे कि करि पालेनी ना ड्यू टू द इगोइज्म, ड्यू टू द एटीट्यूड होल्डिंग बाय द जते बेले एटा 1970 रे एस्टैब्लिश हैतिला. सेतले कोन हैला ना डायरेक्टर मानकर ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, डिफरेंट काइंड ऑफ इगोस होल्ड बाय द डायरेक्टर्स. समान कहले आमे जीव गोटे ट्रेड यूनियन वर्कर मानक सहित डिस्कशन करिया को नो वे एमती केमती हबो. सेमाने आसीबे आम पाखकू ये कहबे सी आसु आम पाखकू ये कहले आमे जीव तांको पाखकू एमिति सबु प्रॉब्लम नै किरी कोन हैला ना बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन वाज एट दैट टाइम बट it was not successful, it was completely failed, right? So age of board level participation failure hella seiti pai kon kara gala na workers participation in management under 20-point program re ona gala 1975 re WPM under 20-point program. Now what by WPM under 20-point program, what under the 20-point program management program, it leads to joint council and sub council that I will discuss in the next class, and then after this we will discuss the what industrial dispute. Eta sorila pare mu apanakara kon karibi na industrial dispute discussion karibi. Pila mane bujhilo na bujhileni? Yes, ma'am. Kichi doubt achi pura clear na? Yes, ma'am. Students, okay hela to sunantu ethi kon apanakara industrial relation kon मन रखिबे तीनटा चैप्टर आपन को यूनिट 1 को तीनटा चैप्टर कवर करछि. इंडस्ट्रियल रिलेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. इंडस्ट्रियल रिलेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द एक्टर्स एंड व्हाट आर द अप्रोचेस. एसेटी मन रखिबे.
collective bargaining. What is collective bargaining? What are the objectives of collective bargaining? Types of collective bargaining, process of collective bargaining. Workers' participation in management. What is WPM? What are the objectives, importance, needs of WPM, and what are the forms and levels of workers' participation in management? जो थिरे कि आपनकर अछि suggestion scheme, work committee, joint management council, board level participation, and last रे आपनकर जोटा कि हमें coming class रे just 2 minutes रे discussion complete करिकी then we will move towards the different acts. Act रसला first हमें discussion करिबा industrial dispute act. ठीक अछि? So discussion करिबा नि कि क्वालिटी सर्कल टा छोटो येटा अछि हमें ए सब कंप्लीट हे साला परे मूव करिया क्वालिटी सर्कल को कारण मेजर मेजर एक्ट आग अछि हैला एक्ट आगरे कोन जाउची आपनकर जेते सब तीनटा यूनिट रो एक्ट भर्ती की अछि सो फर्स्ट हम एक्ट को क्विकली फिनिश करिबा देन क्वालिटी सर्कल को परे डिसाइड चिंता करी हैला कारण ऑलमोस्ट हमें तीनटा मेजर पार्ट को यूनिट 1 रे कंप्लीट कर दैछे आईआर डब्ल्यूपीएम एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग ठीक अछि ना पिला माने Yes, yes ma'am. ना दे देबे स्लाइड लास्ट सेटा क्लास होला परे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास आइए हैला ओके चलो थैंक यू बाय बाय थैंक यू सो ma'am. मच काली सेम टाइम 6 o'clock हैला बाय बाय